Hello everyone, good afternoon. This is Debasish. Welcome to Unacademy Live IIT JAM. I hope you guys are absolutely fine, safe, working well for examination. So in this particular class, we're going to discuss some of your questions from DU Biochemistry 2021. So this is a recent paper we have because last year's paper only, DU Biochemistry 2021. So we're going to discuss some questions on DU Biochemistry. If at all you can answer the question, please let me know on the comment box in the live chat. You can answer all those questions in the live chat. I will wait for some time to people join and then after we'll start. So please let me know on the board. So welcome to the session, guys. This is Debasish. Welcome to Unacademy Live. So this is a live question answer session. If at all you want to reach the session to many people, so please do share with your friends so that they could also join the session and we can have a amazing session. We can have a lot of people and we can see how much capacity we have, how much concepts we have. Some questions are obviously memory based. Okay, so if at all you are first time in my class, so I'm Debasish, your plus and verified educator in the IIT JAM category. I have been teaching here since 2 years. So I have completed my bachelor's in geology from Utkal University, master's in life sciences from Central University of Jharkhand. I have cleared GATE life sciences 2 times and CSIR-NET 104 and 43 rank. So these are the achievement my students. So you can see there is a new offer. If I tell you are going to take a subscription for 9 months, you are going to get 2 months for free. For 12 months, you are going to get 3 months for free. For 24 months, you are going to get 4 months for free. So these are the free months you are going to get if at all you are going to take the subscription for 9 months, 12 months, and 24 months. For 9 months, you have to pay only 11,025 rupees. For 12 months, you have to pay 12,252 rupees. For 24 months, you have to pay 17,820 rupees. So these are the price range you have to pay. And you can use the code DKSRLIVE. DKSR Live. So the price is going to hike very soon. If at all you want to take the opportunity, so please take this opportunity and get into your dream university, college, wherever you want to go and have your master's done. So DKSR Live you can use anytime. So DU 2022 full length mock test is also there. So you can appear for the mock test and you can use the code DKSR Live for 10% off. And in this case, due 2022 mock test, we are going to get all these things for free. So it is on March 15th, 2022 and 2 p.m. The timing is 2 p.m. and this is an absolutely free test. You can get all those tests and their solution in absolutely free of cost. So these are the courses I have completed so far. This is the ongoing upcoming courses on human physiology techniques and PYQ on genetics. And ongoing course is PYQ on biochemistry. And from today, I'm going to start this techniques course at 7 p.m. So this is a complete course on all those techniques. Whether you are going to appear for any of the examination like IIT JAM, GATB, DU, BHU, CUSET, any of the examination you're going to give. So this techniques course is going to help you for all the necessary examination. Okay, so this is the first question, and this is a memory based question because the scientist who identified the transforming agent in Griffith's famous experiment as DNA was. So Griffith every experiment आपका transforming एक molecule पाया था आपका transforming agent और उसको confirm किए थे, identify किए थे कौन सा साइंटिस्ट? Erwin Chargaff, Oswald Avery, Friedrich Mischer, Peter Michel. It's Peter Michael. Okay. तो मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है फ्लो में, so you can just choose your answer. So Avery, Griffith Avery experiment. So Avery आपका DNAs यूज करके, so DNAs, RNAs, proteases इन सबको यूज करके आपका डिटरमाइन किए थे कि आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है क्या. The scientist who created the first recombinant DNA molecule.
First recombinant DNA molecule. It's Paulberg. Option 2. Next question. Which of the following pair of amino acids are both glucogenic and ketogenic in nature? Glucosenic and ketogenic. So alanine, lysine, lysine, leucine, isoleucine, phenylalanine, aspartate, aspartic acid, or lysine. Anyone want to answer? So this is isoleucine and phenylalanine. I and F. इसके अलावा और कौन से अमाइनो एसिड है जो बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है? Please answer in the comment box. Okay, so this is a matching based question. Here you can see in list 1, these are the coenzymes, and list 2, the functional group. So match the coenzyme in list 1, serving as transient carriers of specific atoms and functional groups in list 2. So have to match. ओके, सो कोएंजाइम में आपका असाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है. सो यू कैन सी ए आई वी. Okay, so if at all you know you got the answer, there is only unique option with A. Flavin adenine dinucleotide, FAD. सो FAD जो है ये आपका ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन एटम का. ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं जनरली आपका हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांसफर करवाते हैं H+ एटम्स का, राइट? सो B give you 3. Pyridoxal phosphate. So pyridoxal phosphate आपका अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करवाता है C सेकेंड, एंड थायमिन पायरोफॉस्फेट एल्डिहाइड ग्रुप का करवाता है D1. नेक्स्ट, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज. Glycogen phosphorylase exists in 2 forms in skeletal muscle. The active form of phosphorylase A is generated from phosphorylase B. So basically the question is given here, the phosphorylase B will convert to phosphorylase A. Okay, so the phosphorylase B will be converted to phosphorylase A. Okay, so what is the process of conversion of phosphorylase B to phosphorylase A? So basically B is the inactive form and the A is the active form. Okay, so this is the inactive form and this is the active form. So what is the reason, like how it will convert into inactive to inactive form? That is the question. Reversible dimerization of phosphorylase B triggered by calcium ion? No. Proteolytic cleavage of
Decapeptide. Decapeptide. So can you see what is decapeptide? So a peptide having 10 amino acids, right? Decapeptide. From N terminus of phosphorylase B. No, not this is not the method. Then protonation of active site histidine residue by decrease in the intracellular pH. It is also not the correct answer. ATP dependent phosphorylation of a specific serine residue on each subunit. So there will be a phosphorylation by the kinase activity, because ATP dependent phosphorylation means is the kinase activity. Phosphorylate kinase. So phosphorylate kinase क्या करता है? Phosphorylase B से phosphorylase A करता है आपका phosphate ऐड करके, एंड phosphate कहां से लिया जाता है? phosphate आपका ATP से लिया जाता है, ठीक है? What are bile salts? What are bile salts? So bile salts basically functions as emulsifiers of fats. So fats को emulsify करता है, आप लोग बोल सकते हैं fats का globules बनाते हैं, right? So fats का globules कैसे बनाते हैं? So emulsify करते हैं, जैसे हम लोग like हमारे हाथ में कुछ तेल का लग जाता है, so we use soaps, right? उसमें bubbles आता है हाथ से, हमारा तेल का जो like क्या होता है, stickiness जो होता है वो छूट जाता है. So emulsification आपका ऐसे होता है. Fats आपके water soluble नहीं होते, fats आपके वाटर सॉल्युबल अगर नहीं होंगे तो ब्लड में, फ्लूइड में आपका नहीं मिल सकते, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका इमल्सिफिकेशन का जरूरत होता है. और इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होगा? आपका बाइल सॉल्ट्स के थ्रू. सो दे शुड बी एम्फीपैथिक, isn't it? They are amphipathic polystyrol along with detergent properties. So detergent समझ में आ रहा है? Detergent जैसे आपका कपड़ों से मेल जो है रिमूव कर देता है, डॉट रिमूव कर देता है, ऑयल रिमूव कर देता है, लाइक दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सो सेल साइकिल दिया है, आपको अरेंज करना है. Phosphorylation of lamin A, B, and C, the nuclear lamins. Phosphorylation of RB, retinoblastoma protein or gene. Polyubiquitination of securin. Association of inner nuclear membrane proteins and nuclear pore complex proteins with chromosomes. तो आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन सेल साइकिल. पहले क्या होगा? ओके, सो गाइस, फॉस्फोरिलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन, जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन पहले होगा, उसके बाद आपका लैमिन जो होंगे, लैमिन एबीसी आपका डिसक्ट होंगे और उसका फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है? ये सब आपका G1 to H ट्रांजिशन के टाइम पे होगा. देन आपका सिक्यूरिन का पॉलीविक्टिलेशन होगा. देन फाइनली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड पोर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, एसोसिएशन होगा और कंडेंसेशन होगा धीरे धीरे. सो BACD. Next, which of the following diseases are related to coronavirus? Every time you get a question recent days from a coronavirus. First job, एक क्वेश्चन तो कोरोना वायरस से आना ही आना है. ओके, सो दिस इज मर्स. सार्स का पहले जो है पैंडेमिक आया था, सॉरी आई थिंक इज एपिडेमिक. सो ये आपका मर्स आया था, ठीक है, मर्स कोरोना वायरस. सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम. बॉल्स एंड स्टिक्स इन रैस मोल्ड. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो ऐसे कॉलेजेस में बनाए होंगे इसको भी. बॉल्स एंड स्टिक्स इन रैस मोल्ड. तो विजुअलाइजिंग आपका प्लेटफॉर्म है, विजुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर है जिसको रैस मोल्ड बोला जाता है. हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग. Solid spheres are rods representing atoms and bonds, respectively. Cylinders of spiral ribbons to represent alpha helices and broad
flat arrows to represent beta strands, line drawing representing bonds between atoms. Okay, so the answer would be A. सॉलिड स्पीयर्स, आपका जो सॉलिड स्पीयर्स होते हैं ये आपके एटम्स होते हैं, ये आपके एटम्स होते हैं, और उनके बीच में जो है ये आपका बॉन्ड को डिनोट करता है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एसिड हाइड्रोलाइजेस ऑफ लाइसोसोम डू नॉट डाइजेस्ट द ऑर्गेनेल इटसेल्फ. ऑर्गेनेल को लाइसोसोम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्यों? Optimal pH, zymogens, heavily glycosylated, ultimately the lysosomes are also degraded. मतलब ये बोला है कि स्टेटमेंट गलत दिया है, ultimately lysosome degrade हो जाता है. Right, so you have to find out what is the answer. No, the bands, that's not the answer. Okay, so the answer would be third. So lysosomal milieu doesn't provide the optimal pH. Obviously it provide the optimal pH क्योंकि जितने भी आपका डिग्रेडेशंस होते हैं, आपका डाइजेशंस होते हैं, so ये लाइसोसोम के अंदर ही होते हैं. So it provides the optimum pH क्योंकि वो एसिड हाइड्रोलाइसिस जो है वो आपका बहुत ही कम pH पे, लो pH पे काम करते हैं, right? So that's why आपका लाइसोसोमल मिलियू आपका ऑप्टिमल pH प्रोवाइड करता है. These enzymes are present as zymogen. No, क्योंकि आपका लाइसोसोम के अंदर ही आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाते हैं सारे ऑर्गेनेल्स, तो आपका इंटरसेलुलर जाइमोजन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एक्टिव एंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. बट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है. ठीक है, लाइसोसोमल जो आपका मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स होंगे दे आर हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड. तो ग्लाइकोसाइलेटेड समझ में आ गया कि इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होंगे. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स उनको डिग्रेडेशन से बचाएंगे मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो लाइपेजेस होंगे इसके अंदर, वो ग्लाइकोसाइलेटेड जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे. Next question. Which chemical you will use for quantifying DNA? For DNA quantification, which chemical do you use? So the answer would be diphenylamine. So जो डांसेल क्लोराइड मेथड है नीन हाइड्रोजन टेस्ट, तो ये किसके लिए यूज होता है? आपका प्रोटीन. नीन हाइड्रोजन आपका भी प्रोटीन के लिए यूज होता है. ये प्रोटीन के साथ आपका येलो कलर देता है. ऑर्सिनल जो है ये आपका आरएनए के लिए यूज होता है, and diphenylamine आपका डीएनए के लिए यूज होता है. So these are the reasons, these are the chemicals which are used for quantification. Next. Which of the following bonds inside a cell can be formed by the COOH group of cellular amino acids? Okay. So COOH आपका अमाइड बॉन्ड करता है या पेप्टाइड बॉन्ड, द सेम थिंग. अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड ये तो क्लियर है सबको. सो जहां जहां पर अमाइड है उसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं फॉर अ चेंज. सो नेक्स्ट आपका ईस्टर बॉन्ड एंड अमाइड बॉन्ड. ये जस्ट अ सेकेंड.
सो दिस आर द ईस्टर बॉन्ड्स एंड अमाइड फॉर्म होते हैं लिपिड्स में, अमाइड बॉन्ड आपके प्रोटीन्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नहीं होगा, रुको। इथर बॉन्ड इससे नहीं होता है, इथर बॉन्ड खाली बस ऑक्सीजन से होता है, डी होगा आपका ये। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन से लेकिन ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी सारा सही है। Okay, so let me explain this question for you. A protein sample was subjected to reducing SDS phase, displayed two bands of molecular weight 20 and 25 kilodalton. When the same protein sample was subjected to non-reducing isoelectric focusing, a single band was observed. So these observations are best explained with the following relevant reasoning. The sample either contains two proteins of different molecular weight, सही हो सकता है, एंड सेम नेट चार्ज, सेम नेट चार्ज होगा, इसीलिए आपका आईएफ में एक ही बैंड आ रहा है, और वन प्रोटीन विथ टू सबनेट्स डिफर इन मॉलिक्यूलर वेट बट शेयर सेम नेट चार्ज. दिस इज ऑल्सो द सेम, करेक्ट आंसर. The sample contains two proteins of different molecular weight and same net charge. नहीं, so आपका two different molecular weight अगर प्रोटीन होंगे और सेम नेट चार्ज होंगे, ठीक है, तो आपका आइसोलेटिव फोकसिंग पे भी आपके दो क्या आते हैं, अलग अलग आपका बैंड आते हैं, एंड एसडीएस पेज में ऑब्वियसली दो बैंड आएंगे आपका, isn't it? So अगर आपके the sample is a heterodimer with two subunits sharing the same net charge but different molecular weight, तो अगर आपका सैंपल हेटेरोडाइमर है, लाइक आपका हेटेरोडाइमर है और यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिज से बंधा हुआ है, ठीक है, तब भी आपका ये वाला कंडीशन आ सकता है जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, बट हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई वी कैन चूज अ वन. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? एसडीएस पेज किया गया है, एसडीएस पेज तो आपका रिड्यूसिंग होता है जो आपका डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक कर देता है, तो जिसके वजह से डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक कर दिया, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक करने की वजह से आपका क्या आया, यहाँ पर दो बैंड्स आए, ठीक है, 25 किलो डाल्टन एंड 20 किलो डाल्टन, ठीक है, एंड आपका जो आइसोलेटरी फोकसिंग आया यहां पर आपका सेम एक ही बैंड आया. तो इसका मतलब क्या है, सैंपल में दो प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, दो प्रोटीन जिसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट आता, ठीक है, तो इसके वजह से एसडीएस पेज में ये आया, और आपका सेम नेट चार्ज होंगे, ठीक है, सेम नेट चार्ज होंगे तभी तो आपका सेम पोजीशन में आया, क्योंकि डिफरेंस उतना ज्यादा है नहीं, और एक ही प्रोटीन है जिसमें दो सबनेट्स हैं, जिसके वजह से डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रेक हो गया और आपके दो प्रोटीन बैंड्स आए, मॉलिक्यूलर वेट डिफर करेगा बट सेम नेट चार्ज आया, ठीक है, नेट चार्ज सेम है, इसीलिए आपका आइसोलेटिव फोकसिंग में सेम जगह पे पोजीशन आएगा. So the first part of A and B are same. Okay, let me see. Okay, B आप बोल रहे wrong होगा तो okay. The sample contains, so this is the most appropriate answer I have said, right? क्योंकि यहाँ पर दोनों condition दिया गया है, so these are the both the conditions are possible. The sample contains two proteins of different molecular weight. ठीक है, अगर दो proteins है different molecular weight है and same net charge, okay, same net charge होगा तो isolated focusing पे same जगह पे आएंगे, same net charge नहीं, अगर गाइस ये आपके सेम नेट चार्ज होते, ठीक है, सेम नेट चार्ज होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट आते हैं, आइसोलेटिव फोकसिंग पे दो बैंड्स आते हैं, ठीक है, आइसोलेटिव फोकसिंग पे दो बैंड आएंगे,
क्योंकि आपका दो प्रोटीन होंगे ना आपका, सो अलग अलग बैंड आएंगे। सो आइसोलेटिक फोकसिंग जो है नॉन रिड्यूसिंग है, ये आपका डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक नहीं कर सकता है। फॉर दैट रीजन ये आपका सेम एक ही बैंड आना चाहिए। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? Okay, the sample contains two proteins of different molecular weight and same net charge. Okay, I got you. The sample is a heterodimer with subunits sharing the same net charge but different in molecular weight. Yeah, I got you. So, I think option third will be the answer. Yes. ये हेटेरोडाइमर होगा जिसमें दो सबयूनिट्स होंगे जिसका सेम नेट चार्ज होगा, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपका एक ही बैंड आया आइसोलेटेड फोकसिंग पे और आपका एसडीएस पेज में दो बैंड्स आए। या यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट देवांश, थैंक यू सो मच। सो दिस इज योर, आई गॉट यू, या सो थर्ड विल बी द आंसर, यस करेक्ट। सो एसडीएस पेज and this is isoelectric focusing, yeah correct, thank you so much. So the answer would be third. Uncouplers dinitrophenol and thermogenin DNP or thermogenin uncouple electron transport and oxidative phosphorylation by so dissipating the proton gradient, so which will in return gives us high amount of heat हम लोग को provide करता है। Next question. So an enzyme has a kcat value 600 per second. Second inverse is also called as second per second. तो हम लोग को केम वैल्यू कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन 9.6 micromolar per second. And substrate concentration 40 micromolar. And total enzyme concentration is 0.02 micromolar, right? So first of all, find out the Vmax. Vmax find out करिए, फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, उसको उतना भी कर लो। So Vmax is equal to kcat into E, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, और ई टी हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज द सेम थिंग। इसको कैलकुलेट करिए। kcat आपका कितना गिवन है? 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 माइक्रोमोलर। सो आप लोगों को कितना मिलेगा आंसर? आई थिंक 12। 600 into 0.02, yeah, is 12 micromolar per second. So आपको गिवन क्या है, क्या निकालना है? केम निकालना है, ओके। सो V is equal to Vmax S upon Km plus S. So Vmax आपका कितना होगा? 12। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है इधर? 40। Km हम लोग को गिवन है, लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द Km इनटू आपका सॉरी इज अ प्लस प्लस सबस्टिट्यूशन 40 एंड V आपका कितना निकला है? ओके ओके सॉरी, वेलोसिटी आपका कितना दिया है? रेट 9.6, ओके फाइन। सो वी हैव टू फाइंड आउट 9.6 into km plus 40 is equal to 480. सो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है सब भाग जाते हैं। देखिए नेहा, मेन थिंग मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बुक्स मैटर नहीं करते। द थिंग इज आप
कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। सो अगर आप कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, सो देन यू आर गुड टू गो, नो नीड टू वरी, वट एवर द बुक कैन फाइंड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप कुछ भी बुक पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, सो देन यू आर गुड टू गो फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, सो 10 माइक्रोमोलर विल बी द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया बाबू। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सो डोंट वरी, you are good to go. Any book you can read. And Pathfinder is a reference book, so it's better to read all those textbooks. Which one of the following is not a heme protein? इनमें से कौन सा हीम प्रोटीन नहीं है? कैटेलेज, ट्रिप्टोफान पाइरोलेज, डेल्टा अमीनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज, cytochrome oxidase. So the answer would be 3, delta amino levelinic acid synthetase. Multi-enzyme system includes. Multi-enzyme system includes. सो फैटी एसाइल सिंथेटेज, सो फैटी एसिड जो सिंथेसिस होता है फैटी एसाइल सिंथेसिस का, सो आपके जो 4 प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस पे एक एक एंजाइम रखते हैं, तो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, सो दैट इज अ एंजाइम, दैट्स एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट, द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन इज 6.0 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एट pH 8.0, द प्रोटीन कहां पर मूव करेगा? So the answer would be moves towards a node. Okay. So question is given कि आपका प्रोटीन का pH क्या है, आपका आइसोलेटेड पॉइंट PI 6.0, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे pH 8 पे। So this is a cathode, this is a anode. Okay. So अगर आपका pH 8.0 है, ठीक है, तो pH अगर 8.0 है, so this is PI, increased pH, decreased pH. ओके, सो लोअर साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, हायर साइड में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, तो ये एनोड के साइड मूव करेगा बिकॉज इट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, a note. Next question. In glycolysis, pyruvate dehydrogenase is complex. So this is the question from your linkage state. मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा कि आप लोग दिमाग लगा सके थोड़ा ऐसे ब्लाइंड ना हो सके. So that's why I'll just give a little bit of hints. So guys, प्लस पे मैंने PYQ के बैचेस स्टार्ट कर दिए बायोकेमिस्ट्री का. So if at all you are free, you can join at 5:15 PM. बायोकेमिस्ट्री के बाद मेरा जेनेटिक्स भी आ रहे हैं. So you can watch any of the class. I don't think you were correct. Okay. So guys, what is the exact function of this linkage state? ये आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और इसमें प्रोडक्ट और क्या बनता है? प्रोडक्ट और क्या बनता है आपका? इसमें प्रोडक्ट और क्या बनता है? NADH NADH आज प्रोडक्ट बनता है. So these are the products. Acetyl coenzyme and NADH. So these are the products. So this will do the feedback inhibition. So NADH, A and C. Next question. The approximate molecular weight of the product after the translation of a 390 bases mRNA will be. The approximate molecular weight of the product after translation of 390 bases mRNA will be. So mRNA contains 390 bases. Okay. So in the case divided by 3, can say 130. तो हम लोग एक stop codon होगा, but let us ignore this. Approximate किया है, so you'll get our answer. So 130 आपके कितने होंगे अमाइनो एसिड्स होंगे. So 1 अमाइनो एसिड का वेट हम लोग कितना लेते हैं? अप्रोक्सीमेट 110 डाल्टन. So 130 अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 130 into 110 is going to get you 14,000 something, right? So 14 kilodalton approximate. Is that clear? Yes, correct, Devansh. You're absolutely correct. Next question. Natural proteins are composed of 20 alpha amino acids. Which of the following statements is true for any of these amino acids in a solution of pH 1.5? 1.5 pH पे क्या होगा आपका?
बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर आयोनाइज्ड, नो। आपका अमाइनो ग्रुप बहुत ही हाई पीएच पे आयोनाइज होता है, दिस इज अमाइनो ग्रुप। ये आपके एसिडिक पीएच में कैसे होगा? ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका आयोनाइज होंगे एसिडिक पीएच पे, ठीक है। अगर आपका नेचुरल कंडीशन से आप 1.5 पे ले जाएंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आयोनाइज होगा और आपका कोई भी आयोनाइज नहीं होंगे। The arrangement of nucleotides in DNA can be seen by. The arrangements of nucleotides in DNA can be seen by X-ray crystallography. D. No. न्यूट्रल नहीं होंगे। आप लो पीएच में ले रहे हैं तो आपका डी प्रोटोनेशन होगा, सॉरी प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन होगा, सॉरी जैसे लो पीएच पे लेंगे आप प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन अगर होगा तो आपका H+ आयनाइज होगा COH से। Amino acid residues which are predominantly involved in the protein DNA interactions are very simple question. Protein DNA interaction. तो बेसिकली अमाइनो एसिड पूछा है तो डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन कौन सा काम करेगा? यस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये आपके, ओ इट्स नॉट लाइसिन के, लाइसिन एंड ल्यूसिन मैंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो आपके प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the amino acid which can exist as a diastereomer. ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। इज अ डायस्टेरियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। डायस्टेरियोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर आर डिफरेंट, ठीक है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। या सो द आंसर बी आइसोल्यूशन, ग्लाइसिन नहीं होगा, ग्लाइसिन का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। सो आपके डायस्टेरियो आइसोमर्स किसमें होते हैं? जिसका मोर देन 1 कायरल सेंटर होते हैं, मोर देन 1 कायरल सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टेरियो आइसोमर। यस करेक्ट, और एक सेराइन का भी होता है, isn't it? चलिए, so I'll continue with some other questions from tomorrow. So at the same time, 12 p.m. So you can join at today's 9 p.m. I have a rapid fire round of BHU examination. So if at all you're free, you can join that session as well. 9 p.m. Remember that. So I have shared all this link in the Bio Lexicon, the Telegram channel. This is Bio Lexicon. Okay, you can search it on Telegram channel. If you want to take a subscription, then you'll get daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, unlimited access. So you can use the code DKSR live. So now this offer is going on. So 9+2, 12+3 and 24+4. The price is going to hike very, very soon. If at all you want to take the subscription, take it as soon as possible and get your dream college. Thank you so much, guys.